ठीक है, let's start. Hi everyone, welcome to today's video. Today we'll understand what are the two different types of sort of trading and investing, which can be done in a stock market. So let's try to understand who exactly are traders and who exactly are investors. Trader वो लोग होते हैं जो कि इंट्राडे मतलब एक दिन में ट्रेड करके फिर वापस अपने आप को मतलब सुबह खरीदा, शाम में किसी चीज को बेच दिया, उसे हम ट्रेडर कहेंगे। या फिर 2-3 दिन के लिए रखा, एक हफ्ते 2 हफ्ते के लिए रखा, हफ्ते 10 दिन के लिए रखा और फिर बंदे ने वापस सेल कर दिया, तो उसे हम ट्रेडर कहेंगे। इन्वेस्टर्स कौन होते हैं? इन्वेस्टर्स वो होते हैं जो एक लॉन्ग टर्म के लिए किसी भी स्टॉक को लेके रखते हैं, पकड़ के रखते हैं, उनको हम इन्वेस्टर्स बोलते हैं। दोनों के बीच का मेजर डिफरेंस ये होता है कि भाई ट्रेडर जो होते हैं वो कुछ टाइम के लिए मार्केट में रहेंगे, देखेंगे कि भाई ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है और किसी भी ट्रेड में अंदर आके एंड देन दे विल जस्ट मूव आउट ऑफ दैट ट्रेड, दे विल बुक अ प्रॉफिट और बुक अ लॉस एंड देन दे विल मूव आउट ऑफ दैट पर्टिकुलर ट्रेड. Those are traders, and investors will invest for a very long term. Then what is the annual return percentage between both of them? So the traders will usually make 10% in a month, 10% profit loss, anything in a month, generally 10 to 15%. Investors will usually go for 10 to 15%, 15 to 20% growth per year, per annum. So that's the major difference between a trader and an investor. The risk associated with trading, obviously, because you need, if you have a target at your back that you need 10%, 15% per month, then but obvious है that you have a target painted at your back. So there will be a lot of tension, lot of stress that I have to achieve that target. या फिर थोड़ा सा भी stock price ऊपर नीचे जाएगा, you will feel मतलब जरा सा भी market jittery हुआ, then you will feel like, oh, the market is jittery. Should I book a loss or should I book a profit? What should I do? So that's there's a lot of risk associated. Investing is like, यार कि ठीक है market आज नीचे जा भी रहा है, so on an average after some time the market has to go up and ultimately I'll book a profit. So that's I mean, there's a very major risk which is associated with trading as compared to investing. And of course, the time which is consumed inside trading is quite high because you have to invest yourself. आपको जो है हर दिन बैठना पड़ेगा, स्क्रीन देखनी पड़ेगी कि भाई स्टॉक कहाँ मूव कर रहा है, क्योंकि स्टॉक प्राइसेस जो होते हैं दे मूव constantly, they move every second. So every second you need to sit on your laptop and see that, okay, it has gone 5 points up, it has gone 5 points down. So there's a lot of time that gets consumed when you're a trader. Now, there's a quick quiz which I have for you. These are well-renowned people in stock market. As you know, Bill Gates, as you know, Larry Page, as you know, Mark Zuckerberg, that these are renowned people who have transformed IT industry or computer industry or digital industry or in a broader range. These are the people who are known for their stock market trading or investments. So here's a quiz for you. Mr. Rakesh Jhunjhunwala's net worth is around 11,000 crores. These are crores, not just rupees. Mr. Radhakishan Dhanani, of course, has a 1.42 lakh crore rupees he has earned from stock market. That's his net worth. And of course, Ramdev Agarwal, his net worth is around 4,400 crores. There are a lot of other people who are in the stock market, but these I mean, I want to know all of these people in the stock market, are they investors or traders? Anyone? Investors. Okay. Aisha, Mariam, Roshan? Investors. Okay. Anyone else? अच्छा, मतलब 2 लोग ध्यान दे रहे हैं, बाकी सब सो रहे हैं. ठीक है. You both are correct. Basically, these are investors. Roshan, please put it on mute. Your voice is audible over here. Okay. So basically, these are investors. They are not traders. So always remember, investment increases your wealth because there's something known as, there's something that we'll understand today, why investment creates wealth and not trading.
because even while you're trading, you tend to you're very fascinated by seeing that, okay, 10 to 15% per month. But why exactly are traders not successful, and what is the ratio of a trader being successful and an investor being successful? Let's have a look at that. So, okay, why is this not going to the next slide? Okay, there you go. So fact check. 90. So Zerodha is one of the biggest. Zerodha is one of the biggest, brokerage firm in India. Everyone knows it. And actually, this is a snippet of a blog, which was, an interview with Nitin Kamath, the CEO of Zerodha. 95%, of the people, there was an interviewer who was taking an interview, and he asked that 95% sounds like a very huge number. So there was a study which said that 95% of the people who trade actually end up making losses. They don't make profit. So he was asking Nitin Kamath, CEO of Zerodha, that 95% of seems to be a pretty high number. So Nitin actually said that he publicly shared that over 1 year, over 99% of traders have lost their money. Only 0.99% or only 1% of traders actually make money. Why? Because there are a lot of factors that are involved. The biggest factor being no strategy. कल को आपके फ्रेंड ने किसी ने बोल दिया कि भाई ये बाय कर ले, बहुत ऊपर जाने वाला है, and you just buy it. So there's no strategy behind it. There's no maths or there's no science behind whatever you're buying or selling. Yeah, news पे सुन लिया, and the biggest problem faced by today Indian market is going via news. मतलब लोग क्या करते हैं, CNBC वगैरह देखते हैं, उस पे देखते हैं कि भाई ये बोल रहा है कि इस कंपनी की इतनी ज्यादा प्रॉफिट है, स्टॉक मार्केट इतना ये जाएगा, ये कंपनी इतनी ऊपर जानी चाहिए, और हमने उसके अंदर ट्रेड कर दिया. There's no strategy, there's no logic behind it. सब भेड़ चाल ही चल रहे, जिसकी वजह से इतना हाई नंबर है दैट 99% ऑफ ट्रेडर्स आर जस्ट मेकिंग मनी. देन देयर इज समथिंग नोन एज लेवरेज, कि आपके पास 1 लाख रुपए, आप 10 लाख रुपए का ट्रेड कर सकते हो इन एन इंट्राडे मार्केट, कि भाई आप 10 लाख रुपए के स्टॉक खरीदो, बट आपको एट द एंड ऑफ द डे उसको मतलब स्क्वायर ऑफ करना ही पड़ेगा या सेल ऑफ करना ही पड़ेगा. सो दैट्स अनदर इशू, राइट? इफ यू मतलब जितनी बड़ी आपकी चादर हो उतनी आप पैर फैलाओ ना यार. व्हाई डू यू वांट टू टेक ओवर लेवरेज? देन देयर इज नो इमोशनल डिसिप्लिन. सपोज करो कि आपको दिख रहा है कि आपने 10 लाख का खरीद तो लिया पोर्टफोलियो में. अब अगर वो मान लो 1% भी नीचे जाता है, तो आपके स्टॉक्स, क्योंकि आपने 10 टाइम्स लेवरेज लेके रखा है, आपके स्टॉक्स के हिसाब से तो आप देखोगे कि भाई मुझे 1% का लॉस हो रहा है वहीं के वहीं, मतलब 10% का लॉस आपके मनी के हिसाब से देखोगे तो वो दिखेगा कि भाई 10% का लॉस हो रहा है मेरा, तो वो 1% भी नीचे गया तो आप इमोशनली ये बोलोगे यार ये तो सीधे सीधे मेरे 1 लाख रुपए से 10,000 रुपए कट गए और सिर्फ 90,000 बच रहे हैं. सो यू जस्ट सेल ऑफ, यू डू अ पैनिक सेल. देयर इज नो इमोशनल डिसिप्लिन व्हिच इज इन्वॉल्वड. एंड लॉट ऑफ हाइप्ड स्टॉक्स जो कि बस लोग न्यूज पे चिल्ला ही रहे हैं या एसएमएस भेज ही रहे हैं कि भाई ये वाला स्टॉक बाय कर लो, बहुत ऊपर जाने वाला है, इसके बहुत स्ट्रॉन्ग, मेरे पास से खबर आई है पता नहीं कहाँ से, किधर किसी के, वो सीधे एनएससी के थ्रू खबर आई है मेरे पास. So these kind of things happen. Please don't go via those calls. There's something known as pump and dump. All they are doing is they are applying pump and dump strategy, जिसमें एक बड़ा इन्वेस्टर ऑलरेडी उसके अंदर खूब सारा पैसा लगा के उस स्टॉक को ऑलरेडी बहुत ज्यादा इन्फ्लेट कर चुका होता है. अब उसके बाद उस बंदे को अब प्रॉफिट कमाना है, उस बंदे को उसका प्रॉफिट बुक करना है, तो वो क्या करता है, वो सब जगह एसएमएस भिजवाता है, सब जगह खबर फैलवा देता है कि भाई इस स्टॉक में देखो इतना परसेंट रिटर्न दे दिया, 20% 30% रिटर्न दे दिया इस स्टॉक ने पिछले 1 महीने में, 2 महीने में, और एंड यू गाइज जंप इनटू दैट स्टॉक. एंड दैट्स द बिगेस्ट, आई मीन that's what that particular shark is trying to do. वो चाह रहा है कि भाई उसने जो स्टॉक्स खरीद के रखे थे अब उसको प्रॉफिट बुक करना है, तो वो आपके ऊपर, मतलब आप वो स्टॉक्स खरीदो और वो अपने स्टॉक्स बेच सके ताकि उसकी एक प्रॉफिट बुक हो सके वहां पे. सो लॉट ऑफ हाइप स्टॉक्स या पंप एंड डंप वगैरह में जब आप जाते हो तो इस तरीके के लॉसेस, मतलब इसीलिए 99% लोग लूज करते हैं और जस्ट 1% लोग जो हैं दे आर सक्सेसफुल इन ट्रेडिंग. लेट्स लुक एट अनदर डेटा पॉइंट. यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जस्ट गूगल करके और उसके स्निपेट्स डाले मैंने, दैट इन्वेस्टमेंट का कैगर क्या होता है. कैगर मतलब क्यूमुलेटिव रिटर्न्स ओवर 1 year. सो मतलब ओवर अ पीरियड ऑफ 10 years
भाई ऑन एन एवरेज कितने परसेंट से कोई चीज बढ़ी है या घटी है, उसे हम कैगर बोलते हैं. So basically, over the past 20 years, if you see, Nifty 50 has given a CAGR of 14.18%. Over the same period, gold ने 12.38% का CAGR दिया था, and fixed deposits FDs ने सिर्फ 7.1% का CAGR दिया था per annum. ठीक है. अच्छा, इन्फ्लेशन क्या होता है, यहाँ पे हम एक टर्म और समझ लेते हैं. इन्फ्लेशन इज बेसिकली महंगाई. कि भाई कोई चीज पिछले साल अगर 1,000 100 रुपए की मिलती थी, तो आज वही चीज महंगाई की वजह से कितनी महंगी हो गई. फॉर एग्जाम्पल, पेट्रोल अगर पिछले साल 100 रुपए का लीटर मिलता था, तो आज अगर वो 106 रुपए लीटर मिल रहा है ना, तो उसका मतलब इन्फ्लेशन की वजह से सेम 1 लीटर का पेट्रोल जो 100 रुपए का मिलता था, वो आज के जमाने में 106 रुपए का मिल रहा है, क्योंकि हर साल महंगाई बढ़ती जाती है. सो दैट इज व्हाट इन्फ्लेशन इज. सो ओवर द पास्ट 10 years, ऑन एन एवरेज 6% से आपका इन्फ्लेशन रेट इंडिया में बढ़ा है. ठीक है, इतना समझ आया. अब इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपके बैंक में 100 रुपए पड़े हुए थे, तो अगर पिछले साल वो 1 लीटर पेट्रोल खरीद सकते थे, तो आज वही 100 रुपए उस 1 लीटर से कम पेट्रोल खरीद पाएंगे. इसका सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि आपके बैंक में अगर पैसे पड़े हुए हैं ना, अगर आप सोच रहे हो मेरे बैंक में 1 करोड़ रुपए हैं, तो उस 1 करोड़ रुपए की वैल्यू एक्चुअल में इन्फ्लेशन की वजह से हर साल घटती जा रही है, क्योंकि उसकी परचेजिंग पावर कम होती जा रही है. उस 1 करोड़ में जितना आप 10 साल पहले खरीद सकते थे ना, आज उससे बहुत कम खरीद पाओगे. इस वजह से इस चीज को इन्फ्लेशन बोलते हैं. सो अगर देखा जाए तो पिछले 10 सालों में इंडिया का ऑन एन एवरेज इन्फ्लेशन रेट 6% का है. सो इफ यू लुक एट इट, अगर आप इन्वेस्ट नहीं करते हो और अपने बैंक में पैसा रखते हो 10 साल के लिए, सो एक्चुअली यू आर लूजिंग वैल्यू ऑन इट. यू हैव टू एटलीस्ट गेन अ 6% रिटर्न, ताकि उस 100 रुपए की वैल्यू 100 रुपए ही रहे आपके बैंक अकाउंट में. So if you put it in bank, it's actually you're losing on it. But if you invest it wisely in gold, stocks, properties, XYZ, and you make a return of 6%, then आपने सिर्फ ब्रेक इवन किया है कि हाँ भाई, पिछले साल एटलीस्ट जितना पैसा था उतना मेरे पास है. अब इस 6% से ऊपर आप जितना कमाते हो ना, वो आपका प्रॉफिट होता है. वो ये रहता है कि भाई, इस 100 रुपए के अब मैंने 101 रुपए बना लिए, 102 रुपए बना लिए, 110 रुपए बना लिए, ऐसा होता है. ये कॉन्सेप्ट समझ आया? इस कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत? पीपल, सोना नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. Just one more doubt. बोलो. Like if we say Nifty 50 is going down in this month, हम्म. so if we see in long terms, we can invest it, right? हम्म. So as an investor, we have to think about market. What will be the market after 20 years or 10 years? ओके. So, mm, do you also think that this is the right time to invest for a long-term investment? फॉर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, आयुष, ऑलवेज इज अ गुड, एनी टाइम इज अ गुड टाइम टू इन्वेस्ट. क्योंकि आप लॉन्ग टर्म का सोच रहे हो सकता है शॉर्ट टर्म में आपको उसमें लॉस दिखे, क्योंकि मार्केट नीचे जा रहा है. बट हिस्ट्री हमें बताता है कि पिछले 20 साल से निफ्टी जो है वो 14.18% से बढ़ा है. So anytime investing in a market is a good time to invest for a long-term perspective. Short-term में you can see negatives, you can see market falling, you can see market crashing. 2008 में जैसा हुआ था, उससे पहले 1990 में जैसा हुआ था, 1992 में जैसा हुआ था, 1970s में जैसा हुआ था, उसके बाद कोरोना में जैसे हुआ था. You will see your portfolio in negative. But if you have the guts, if you have the balls, I would say, then overall आप हमेशा profit में रहोगे. Because इट्स बैक्ड बाय डेटा. इट इज नॉट, मतलब मैं क्या कहता हूँ वो मायने नहीं रखता है, कोई और क्या कहता है वो मायने नहीं रखता. इट्स जस्ट दैट व्हाट डेटा शोज इज द गॉस्पेल ट्रुथ, राइट? ओके, एनी अदर क्वेश्चंस? आयुष, योर वॉइस इज ब्रेकिंग. Yeah, thanks. ओके, अलीना, आयशा, सो रहे हो क्या? नहीं, ओके. मेरी तो कोई क्वेश्चन नहीं. ओके, ठीक है. सो नाउ लेट्स ऑल्सो लुक एट कि अगर हमने इनिशियली 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते, और हमारा जो निफ्टी का पिछले 20 साल से कैगर आ रहा है 14% का, अगर हमने 10 साल के लिए इन्वेस्ट किया होता, तो हमारे वही 10 लाख रुपए आज के दिन में क्या होते? दैट वुड हैव बीन अराउंड 37 lakhs.
तो 10 साल में हमारे लगभग 3.5 गुना से 4 गुना पैसे बढ़ चुके होते हैं। अभी सेम चीज हम जो है रियल स्टेट के लिए देखते हैं, क्योंकि रियल स्टेट का डे 1 में भी आया था, काफी सारे क्वेश्चंस थे। तो एक आर्टिकल है, न्यूज आर्टिकल है, जिसमें बताया था कि इंडिया का रियल स्टेट मार्केट विल राइज, इज एक्सपेक्टेड टू राइज एट अ कैगर ऑफ 9.6% ड्यूरिंग नेक्स्ट 5 years। सो मतलब इट इज एक्सपेक्टेड, अभी इतना नहीं चल रहा है, बट फिर भी हम ये लेके चलते हैं, अभी लगभग 8-8.5% के आसपास है, बट हम फिर भी लेके चलते हैं कि 9.6% से मतलब ऑफ कोर्स दीज आर जस्ट यू नो targeted numbers, these are something which are projected numbers. Real numbers will be way different from the numbers that are projected, and projection is always over promised, कभी भी अंडर प्रॉमिस नहीं किया जाता है। सो एक्चुअल में अगर आप देखोगे तो ये 9.6% का 2027 में जाके ये 9.6% का और कम होके 9% भी टच कर जाए तो बहुत बड़ी बात होती है। बट स्टिल इवन कंसिडरिंग 9.6% एज कैगर, if you invest 10 lakh rupees in your real estate, that will become 25 lakh rupees. So anyone who was interested in real estate versus stock, here's the data for you, and all the data is available on net. You can go and check, no issues with that. Okay, so 37 lakhs and 25 lakhs. Now the question arises, shall I trade or invest? We are actually building upon the base right now, and we would be going more sophisticatedly, using more sophisticated understanding and studying more sophisticated algorithm. But if you understand the basics, then it would be very easy for me to explain you the sophisticated algorithms. So that's why we are going with very basics. The question over here is, shall I invest or trade? What do you guys think? Should you invest or trade? I think invest because of higher returns. Trading, I don't think the returns are higher. Trading's the return are high, Naisha. Is it? If you trade properly. Okay. People tend to lose on emotions. People tend to lose on news. People tend to lose because of stock tips. But if you actually have a disciplined, non-emotional way of trading, then day trading also 1% people are successful, right? We need to look at that 1%. How can we get into those 1% bracket and not in the 99% bracket? So the question arises, should I trade or invest? We should divide our money into portions. Excellent, Ayush. मतलब मुझे पसंद आता है यार, तू काफी सही बताता है. You should always divide your money. Keep around 70%, 80% of your portfolio for investment purpose, and always keep 20%, 15%, 10%, 25%. I won't go 25. 25 is again, I'm very scared saying 25% of your portfolio, but around 15 to 20% of your portfolio, that's what I do. I keep for trades. Now, do I trade on a daily basis? The answer is no. I don't trade on a daily basis because I don't have the bandwidth, I don't have time, and I'm not a full-time trader in a stock market, right? I have my own studies to do, I have my own time, I have my own XYZ things to do, right? I won't just sit in front of computer for 6 hours straight per day and then just ride a emotional roller coaster for the 6 hours. I won't do that, right? This 15 to 20% of money that you have, you always keep it for trading where you see an opportunity. So this will be an opportunist trade where you see कि भाई ये तो 70%, 75%, 80% ये स्टॉक तो ऊपर जाएगा ही जाएगा या नीचे आएगा ही आएगा. उस चीज के लिए always keep 15 to 20% of your money, and I won't say any frequency, but this trade should generally be once a month, twice a month. जहां मुझे ऐसा दिख रहा है कि भाई 5% रिटर्न एक महीने में निकल जाएगा मेरा, बस मेरे लिए बहुत है. 2.5%, 3%, 4% भी निकल गया ना,
और कोई ऐसी न्यूज आ गई जिसमें 5% तक निकल गया, बस बहुत है मेरे लिए, मैं उतना लेके और निकल जाऊंगा बाहर। अब अल्टीमेटली डिड आई लूज एनीथिंग? नो, बिकॉज मेरा इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी ग्रो कर ही रहा है एज अ ट्री। बट ये ट्रेड्स क्या करते हैं, ये छोटे 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 जो आप ट्रेड्स करते हो ना, वो आपके पोर्टफोलियो में एक तो आपको मार्केट का सेंस समझाता है, मार्केट सीखना सिखाता है आपको, और दूसरा ये रहता है कि भाई इन ट्रेड से आप हल्के 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 ग्रो करते जाते हो। और अगर आप नीचे भी आते हो ना, तो आपको आपके मतलब अगर नेगेटिव भी आते हो, अगर आप लॉस भी खाते हो, तो आपको आपके इमोशंस को कंट्रोल करना आ जाता है इस मार्केट में, कि भाई इस मार्केट में किस तरीके से ट्रेड करना चाहिए और किस तरीके से चीजों को करना चाहिए, वो आप सीख जाते हो। So I would say have some part of your money depending upon your risk appetite, because trading is really risky. So depending upon your risk appetite, have 10%, 15%, 20% max, I would say, of your money for trading purpose, for swing trading or something like that. And then rest of the money you should invest. And then even you can use this 10, 15% of your money for, if your investments are going down, you can use this for averaging and other stuff as well. So never, I would suggest, this is my suggestion, not a investment advice, but this is my suggestion, that always keep some portion of your money always in your, always untouched, so that you have the decision making capacity and as an emergency fund for the stock market itself. कि अगर मार्केट एकदम से गिरा तो मेरे पास भाई एवरेजिंग के लिए कुछ होना चाहिए, ऐसा ना हो कि मैंने मेरा पूरा पैसा झोंक दिया अंदर स्टॉक मार्केट के, ऐसा नहीं होना चाहिए। Okay, so any question, concerns? That's all from my side from today, and we'll build upon this slowly. Any question, concerns? Can you just share some stocks which are good for long-term investment? Like we can read about them. Again, not an investment advice, but I would suggest going for blue chip companies such as, HDFC, AMC, ITC. These are stocks which are, which can never fall, because if these stocks fall, then the whole stock market will fall. I would in fact recommend just Google stocks in Nifty 50, and then based upon the market capital, the stocks which are very high in market capital, Reliance, HDFC, ITC, Tata Motors, then you have HUL, Hindustan Unilever. These kind of stocks are stocks which cannot fall in a long term. So you can always invest in these stocks and then forget about it, because they will always pay you something. So these are some of the stocks. Again, not an investment advice. Do your own due diligence. Look at the balance sheet, look at the company, look at how they are performing, and then invest. Thank Okay. you. Any other questions? All right. Okay, that's all from my side for today's session. Hope you guys enjoyed it, and I'll see you tomorrow. Bye.